All right. Hello and welcome everyone. Welcome back. Welcome back to the differential equation previous year questions or JEE Mains. Okay. So in this lecture, we're going to discuss about the previous year JEE Mains question on differential equation topic. All right. So if you have been following the contents on this over this particular platform for a long time, then you must have seen that after I finish any particular chapter, then as a sort of practice, we generally try to solve the recent previous year question so that we can understand that whatever we are studying are actually valuable or not. Okay. So as an effort to that particular thing, so let's start to discuss about the previous year JEE Mains questions on the topic of differential equation. I hope I'm audible to all of you. So once again, welcome back to this amazing platform of Tutee learning. So hi Dax, thank you. So आज की जो क्लास में हम बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन का भी एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जहां से डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर थोड़ा काफी हेवी होने वाला है। ओके, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड अगेन आई विल आस्क यू फॉर टेल मी द आंसर्स। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ओके, आप वीडियो को उस टाइम पॉज करना, क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो। अगर क्वेश्चन बन जाए तो मुझे सॉल्यूशन बताओ, अगर नहीं बन रहा है तो मुझे बताओ क्या कैसे तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई किया था। ओके, एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर JEE Mains क्वेश्चन। So here we go with a very fast question. Okay, I hope the question is visible on the screen. The question is visible on the screen, right? So I hope you can check the question. So please try to solve this problem. So please try to solve these problems. The problems are quite an interesting problem. Okay. So I will give you some time. Please try to see how you can proceed with the solution. Okay. Now again, if you analyze all the previous year question that has been asked so far on differential equation, you will mostly find the questions on linear differential equation of first order. Okay, the questions on linear differential equation of first order are really, really important. हाय रितेश, नमस्कार सर। टाइमर लगा लो। जी बिल्कुल, मैं टाइमर ऑलरेडी मेरा काउंटिंग में लगा रखा। ओके, सो देर इज अ टाइमिंग ऑफ 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट अब ट्राई करो क्वेश्चन को। ठीक है, फिर आंसर बताओ सब मेरे को। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑन द प्रॉब्लम, so if you analyze the problems, so you can see over here the problem has a composite function. Okay, a problem has over here a composite function. Okay, so इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, एक बार ट्राई करो। दक्ष, मुझे समझ में नहीं आया आपके आगे मतलब। सी द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ राइटिंग इज दैट आर यू आस्किंग अबाउट एज और आगे। आई स्टिल कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर आप इंग्लिश में बात करो तो प्लीज राइट इन इंग्लिश, और अगर हिंदी में बात करो तो प्लीज राइट इन हिंदी। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हिंदी में कब से इंग्लिश वाला अल्फाबेट आने वाला है। ओके, काफी कंफ्यूजिंग होता है ये समझने में। एज सर, एज इन ईयर्स। ओके फाइन सर, इंडिया हारेगा आज बुरा वाला। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके,
बाकी सब सेकेंडरी चीजें है. ओके, आई डोंट केयर अबाउट वॉट एवर इज हैपनिंग एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स. ओके, एक बार लेक्चर खत्म हो जाए देन वी विल डिस्कस अबाउट कौन जीतेगा कौन हारेगा. ओके, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो. क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, काफी प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है रितेश, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का. Okay, so I think 2 minutes is up, so we can now discuss about the question. Okay, तो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से होगे, so fine. First of all, if you look at the question properly, so I have the function f of x as x minus 1, right? So if I try to find the composition of f of f of x, then this can be given as x minus 1 minus of 1, which can be written as x minus of 2. Right, now g of f of x, now this composition can be given as e to the power x minus 2. Right, आशा करते हैं कि ये वाला चीज सबको समझ में आता है. राइट, सो इफ यू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, नाउ इफ यू ट्राई टू राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy by dx, that is equals to e to the power minus 2 square root x into this e to the power x minus 2 minus y upon square root of x. This is our given differential equation. Right, now if I carefully observe this and I try to take this y upon square root x term on the left hand side, then what I will get is that I'll get something of differential equation like this. Oh, sorry. Multiplied with e to the power x minus 2. Right, now if you recall that this form of differential equation is something that we have already studied as something called as a linear differential equation. Right, so you can see that how important linear differential equations are. So this is a linear differential equation, right? So I hope you recall how to solve such linear differential equation. The solution of linear differential equation is basically given by multiplying the following equation by a integrating factor, right? So let us first of all find out that integrating factor. So if I try to find out the integrating factor, that will be e to the power integration of 1 upon square root of x dx, 1 upon square root of x dx, right? So if I find out this integrating factor over here, this will be equals to e to the power 2 root x, right? Now the interesting part over here is that the integrating factor is e to the power 2 root x, and we already have in the q term, we already have e to the power minus 2 root x, right? Now this is basically given such that to cancel out this particular term when you are carrying out the integration of the q term, right, for the general solution, right? So from here, I can write my general solution as, so from here I can write my general solution as y into integration factor, that is e to the power 2 square root of x, that is equal to integration of e to the power minus 2 square root of x into e to the power x minus 2 into e to the power 2 square root of x. Now this part and this part will get cancelled out, right? This part and this part will get cancelled out, and finally we will have e to the power, sorry, y into e to the power 2 square root of x, and that will be equals to e to the power x minus 2 plus some constant c. So this is going to be the general solution, right? However, if you look into the question carefully, the question is not actually asking you for the general solution. It is asking you for the particular solution, right? So over here, the value of y is equal to 0, the value of y is equal to 0 is given as 0, and you have been asked to find out the value of y at x equals to 1. So if I put that over here at x equals to 0, my value of y is also 0. So this particular part is going to be equal to 0. The left hand side is 0 and the right hand side is equals to e to the power minus 2 plus some constant c. So your constant is minus of e to the power minus 2. Right. So from here, now if you try to find out the value of y at x equals to 1, so at x equals to 1, the value of y will be, so y into e to the power 2 is equals to e to the power minus of 1 plus e to the power minus of 2.
right? So from here, you can observe carefully that the value of y at x equals to 1 is coming out as, so y is coming out as 1 upon e minus 1 upon e square whole divided by e square. So if you simplify this part, it is coming as e minus 1 upon e to the power 4. So e minus 1 upon e to the power 4 is basically the final solution. So therefore, from here you can check that question number 1, the answer to this question is option number B. Okay, e minus 1. So option number B is going to be the final solution. I hope this is clear to all of you. I hope this is clear to all of you. Please let me know in the live chat, is this part clear? रितेश, मेरा मैथ्स इतना नीचे गया है सर कि 8 के कोर तक ग्राफ जाएगा. तो ठीक है, अभी टाइम मिल रहा है ना रितेश, ठीक कर लो. रितेश, ढंग से ये सब चीजें पढ़ लो, ठीक है, so that you can also do well in your maths. Okay, any questions, anyone? Any questions? Any questions regarding this particular topic or this solution? So option number B is going to be the final answer. क्या सभी का ऑप्शन नंबर बी आया? Are you all getting the answer of option number B? Are you all getting the answer as option number B or not? Please let me know in the live chat. Are you all getting the option number B as the final answer? Is this clear? Is this part clear? Okay. Please take your time to digest this particular solution. Okay. This is a very simple problem. The differential equation is very straightforward. However, the only thing that was interesting in this problem was that they have tried to use the idea of this composite function. Okay. So instead of giving you the differential equation directly, they have given you some form of composite function in the differential equation form. Okay. So first of all, you have to replace that composite function in the differential equation form, and then you have to try for the solution. Okay. So fairly simple and easy problem. All right. So I hope this is clear to all of you. So is this problem clear? Please let me know yes or no. Is this problem clear or not? I hope this problem is clear, right? रितेश सर, मैं मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आज ग्राउंड पे नहीं गया था, बट वर्तिक सर ने क्लास नहीं ली. आई थिंक मूल कॉन्सेप्ट का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, राइट? रितेश, एक बार चेक करो, मूल कॉन्सेप्ट का क्लास ऑलरेडी हो चुका है. ओके, मूल कॉन्सेप्ट का क्लास ऑलरेडी हो चुका है. आपने शायद मिस कर दिया होगा, राइट? रितेश, यू हैव मिस्ड द मूल कॉन्सेप्ट लेक्चर. ओके, ओके, कोई बात नहीं. सो यू कैन वॉच दैट अगेन. ओके सर, लेक्चर 3 तक ही हुआ है. नो रितेश, एक बार चैनल को चेकआउट तो करो, लेक्चर नंबर 7 तक पहुंच गया है. मूल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 7 तक पहुंच चुका है. ओके, आप थोड़ा लेट चल रहे हो आई थिंक. ओके, मूल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 7 तक चल चुका है, राइट? एक बार चेक करो, चैनल को चेकआउट करो. ओके, आप शायद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया, राइट? सो प्लीज हिट द बेल आइकन, ठीक है? क्योंकि जब भी क्लासेस होता है ना, तब आपको लाइव नोटिफिकेशन मिल जाएगा. अगर आप बेल आइकन दबा के रखते हो तो वो नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ताकि जब भी अब लेक्चर लाइव हो उस टाइम आपको लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ओके ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो हियर वी गो विथ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट? चट्टोपाध्याय, is it sufficient for JEE? I'm new. Yes, it is sufficient for JEE. आप देख सकते हो कि here we are basically discussing about the JEE mains problems as well, right? So if you look back at my previous lectures, you can find that in my previous lectures I have already discussed all those important topics that is basically that is needed to solve any general question of JEE mains and advanced. Okay, so please refer to my previous lectures before you start to watch this particular lecture. Okay, and even if you stay in this particular lecture,
So you can stay in this particular lecture only if you have understand and have studied about the differential equation, because in this particular lecture we are not going to discuss about the theory part. We are only going to discuss about the previous year JEE Mains problems. Okay, I hope this is clear. So please try to solve this problem. Again, 2 minutes time. So you have 2 minutes time to try this problem, and if you get the answer quickly, please tell me the answer. Okay, where are the theory lectures? Please go back to the channel. Please find the playlist. Okay, if you go to the channel and under the live tab, you can find up all the lectures that has been taken so far on differential equation. Okay, also in the playlist, please check out the playlist. Okay, please check out the playlist. Okay, there is a playlist dedicated for JEE Mains and Advanced 2025. Yes sir, misunderstood हो गया, lecture 7 हो गया है, but between lecture network issue occurred and I left. अच्छा ठीक है रितेश, okay, it may happen. Okay, रितेश आप मैथ्स वाले लेक्चर में फोकस करो, मूल कंसेप्ट तो बाद में भी कर लेना, ठीक है। अभी मैथ्स का जो लेक्चर चल रहा है उस पर फोकस करो, ताकि आपको मैथ्स वाला चीज समझ में आ जाए, ताकि आप मैथ्स में भी स्ट्रॉन्ग बनते जाओ, राइट। ठीक है, जैसे मैथ्स का लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर आप मूल कंसेप्ट कर लेना। ओके, ऑलराइट, so I hope this is clear. I hope this part is clear to all of you. I hope this part is clear. Okay, so ये क्वेश्चन करने के ट्राई करो सभी. Please try to solve these problems. Please try to solve these problems. ओके, सो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा. ओके, सो देखते हैं सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करेंगे, राइट. सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, राइट, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू हैव ए गिवन सॉल्यूशन एज द y is equal to y of x is the solution for the following differential equation, right. So अगर आप differential equation को देखते हो, that is given as x square plus 1 into ये y dash दे रखा है, that is basically means derivative of y with respect to x, right, minus 2xy is equals to x to the power 4 plus 2x square plus of 1 times of cos x, right. So अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, what you get over here is that now again this is a linear differential equation. अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है linear differential equation, I can help you out. So if I replace this and if I divide the whole expression with x square plus 1, I'm going to get, alright, यहाँ पे माइनस साइन है, okay, and this is equals to x to the power 4 plus 2x x square plus 1 whole divided by x square plus of 1 into cos of x, right. Now this particular part, that is x to the power 4 plus 2x square plus 1 is nothing but x square plus 1 whole square, right. So आप इसको डिवाइड भी कर दो, alright. So यहाँ से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा, that is dy upon dx minus 2xy by x square plus 1 is equals to x square plus 1 times cos of x, right. So अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, तो दिस इज अगेन अ linear differential equation of first order. So this is again a linear differential equation of first order. Okay, so again it is a linear differential equation of first order. ठीक है सर, मेरा आंसर 23 आ रहा है, एक शॉर्टकट ट्रिक से किया है. 23 तो ऑप्शन में नहीं है. एक बार ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर आ रहा है. 23 नहीं होगा. ऑप्शन से बताओ कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सही हो रहा है. ओके, सो इफ यू लुक इट केयरफुली, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. ना अगेन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन काफी सिंपल होता है. सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो. सो अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास. सो अगर तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो यहाँ पे, सो ये वाला इंटीग्रेशन कैरी आउट करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम टी मान लेते हैं तो 2x dt हो जाएगा, राइट. सो ये काफी सिंपल से इंटीग्रेशन है. जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस ऑफ 1, जो आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 1/x² + 1, ठीक है। दिस इज बाय द बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सो यहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, राइट। सो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है तो अपना जो जनरल सॉल्यूशन होता है फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज बेसिकली y into the integrating factor, that is 1/x² + 1 is equals to integration of x² + 1 into cos x into the integrating factor, that is 1/x² + 1। ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास ये आएगा। तो जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास, दैट इज y इज इक्वल टू x² + 1 into sin x plus some constant constant into x² + 1, okay, something like this, ठीक है, something like this। So यहाँ पे now again if you look back at this question, the question is not asking you for the general solution, it is asking for the particular solution, ठीक है। तो सबसे पहले पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक इनिशियल कंडीशन दिया होना चाहिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्वेश्चन को, आपके पास y का वैल्यू दे रखा है व्हेन योर x इज इक्वल टू 0। सो एट x इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। सो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 1। आप पुट करके चेक कर सकते हो, अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y का वैल्यू आपके पास 1 आएगा, दैट मींस द कांस्टेंट शुड बी इक्वल टू 1, राइट। सो फाइनली जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, दैट इज बेसिकली गिवन एज x² + 1 मल्टीप्लाइड विथ sin x plus 1, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन में बोला गया, दैट इज यू हैव टू इंटीग्रेट y of x dx एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन विद द लोअर लिमिट -3 टू द अपर लिमिट +3। सो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम -3 to +3 y dx, that should be equals to x² + 1 into sin x plus x² + 1, and if you integrate that from -3 to +3, so from -3 to +3, now I'm going to apply the certain properties of definite integral, right? So if you recall by the properties of definite integral, we have studied that sin x is an odd function. So multiplying any function with an odd function becomes an odd function. Therefore, from -a to +a, if I have any odd function integral, then that is basically equal to 0. So my integral reduces only to this particular integral, right? So my integral is now x² + 1 integration from -3 to +3 dx, and that will be equals to 2 times of integration from 0 to 3 x² + 1. So if I carry out this integration, so over here it is basically 2 times of x³ by 3 plus x within the limit 0 to 3. So if I put it back, I'm going to get the solution as equals to 24. So 23 नहीं होने वाला है रितेश, आंसर आने वाला है 24। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सो फाइनली आपके इसके पास आंसर जो आएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 24, ओके। ऑप्शन नंबर बी इज अगेन गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज अगेन गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। एक बार लाइव चैनल बताओ किस किस का ऑप्शन नंबर 24 आया। यस, शाश्वत चट्टोपाध्याय, 24 इज द करेक्ट आंसर। Inspection and even odd function that I use. Very good, Ritesh. Very good. Excellent. All right. So option number B is going to be the correct answer. Great. So I hope क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ओके, एक बार ट्राई करो, अगर आपके पास किसी पे सिली मिस्टेक हो चुका होगा, ओके, सो प्लीज ट्राई इट अगेन, ओके। काफी सिंपल सा आंसर है, दैट शुड बी इक्वल टू 24। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है रितेश, जब भी सिली मिस्टेक हो रहा है ना, आई कैन गिव यू द बेस्ट एडवाइस, ओके। जब भी सिली मिस्टेक हो रहा है, उस पर्टिकुलर सिली मिस्टेक को वहीं पे मार्क करो, ठीक है। जहां आप कॉपी में नोटबुक में जब सॉल्व कर रहे हो ना, सिली मिस्टेक जहां पे भी हो रहा है उसको वहीं पे मार्क करो और उसको एक हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखो, ताकि जो सिली मिस्टेक आप कर रहे हो वो वाला चीज को हाईलाइट करके रखो। जब भी आप उसको रिवाइज करोगे ना, तो हर टाइम उस सिली मिस्टेक को रिवाइज करना, ठीक है।
ताकि जब एग्जाम में हम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वो सिली मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का। ओके, ट्राई टू डू इट वंस, आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर रितेश? क्या ये सबको समझ में आता है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पार्ट क्लियर? एक बार हाँ या ना बता दो, एक बार हाँ या ना बता दो, so that we can proceed to the next problem. So shall we go to the next problem? Great Ritesh. Okay, तो चलते हैं next problem पे. So the next option is on your screen, right over here, right? So एक बार try करो इसको solve करने का. Again you have 2 minutes time. So 2 minutes time. Please try to solve this problem. Take your time and try to get to the exact solution. Okay. Okay Ritesh, करो. Lakshya, Lakshya, try to solve this problem. Hi, hi Lakshya, try to solve this problem. बताओ लक्ष्य क्या डाउट है, अपनी डाउट बताओ लक्ष्य, बाकी लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। Try to solve this question. If you're new to this particular platform, please subscribe to the channel. Okay, please subscribe to the channel and also share these videos with your friends and your relatives and your juniors. Okay, ताकि सबके पास ये लेक्चर्स, ये फ्री लेक्चर्स सबके पास पहुंच जाए। ओके, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सो अगर आप फिर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, व्हाट यू विल गेट ओवर हियर इज दैट, so if you try to observe the differential equation carefully, again this differential equation will take the form of a linear differential equation. How? So let's see over here. So if I write this differential equation by clubbing the dy upon dx term, and then I can write this equation as e to the power x into x minus 2 whole divided by x into x square plus e to the power x whole multiplied with y, and that is equals to x cube upon x times of x square plus e to the power x, right? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा ये स्टेप। ओके, सो फ्रॉम हियर अगेन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप फिर से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हो, सो अगेन इट इज बेसिकली अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो प्लीज ट्राई टू गेट टू द सॉल्यूशन। हमने काफी सारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया है, सो आई थिंक इट वोंट बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश करें सब। लेट मी नो द आंसर इन द लाइव चैट। By now, the linear differential equation solution must have been a bread and butter for all of you, right? So try to solve this problem and let me know the solution in the live chat. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Please let me know the right option. Please let me know the right option. Okay, ट्राई करो। सो यहाँ से अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोशिश करोगे, ओके, सो फ्रॉम हियर, so I'm not solving it directly, so let me find out the integrating factor, that is e to the power integration of e to the power x into x minus 2 whole divided by x into x square plus e to the power x dx, right? So from here your integration factor, will become e to the power x plus x square upon x square. Okay, so e to the power x plus x square upon x square is going to be your integrating factor, right? So fairly simple, काफी easy है इसको solve करना, right? So what you can do from here is that you can club the term, that is e to the power x into x, and that will be divided by x square plus e to the power x and minus of 2 times of e to the power x upon x square plus e to the power x. Okay,
So कुछ ऐसा आएगा, right? And there will be one more x over here, right? But instead of doing it, separating it, now I would recommend all of you to try to replace this particular form in a partial fraction form. Okay, यहाँ पे इंटीग्रेशन काफी इंटरेस्टिंग है. अगर आप इसको partial fraction form में replace करोगे, so the partial fraction form, okay, I am not solving it directly. Please try to solve it by the hints that I am providing. ठीक है, so partial fraction form में अगर replace करोगे तो ये बन जाएगा कुछ e to the power x plus x square, sorry, plus 2x e to the power x plus 2x divided by x square plus e to the power x minus 2 upon x. ठीक है, अगर आप इसको ऐसे रिप्लेस करोगे then only you are going to get to the partial fraction, right? और जब हम partial fraction में रिप्लेस कर चुके हैं, right? So what you can observe over here is that this particular form, if it is assumed as t, then this is dt, right? So अगर आप इसको आप t मानते हो, इसको आप t मानते हो तो ये बन जाएगा आपके पास dt, right? So this can be done by substitution, right? So यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिल जाएगा, right? So यहाँ से आपको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल चुका है. And then if you carry out the general solution, so from here if you carry out the general solution, y into e to the power x plus x square upon x square, that is equal to integration of dx plus constant, that is basically x plus c, right? Or at x equals to 1, the value of y is equal to 0. So यहाँ से आपका constant का value आ जाएगा minus of 1. अगर इसको check करते हो तो the constant value will come out as minus of 1, right? So from here your particular solution is y into e to the power x plus x square upon x square is equals to x minus 1, So if you put now x equals to 2, the value of y will come out as 4 upon e square plus 4. So at x equals to 2, the value of y is going to be this. So from here you can see the answer to this question is going to be option number C. Okay, option number C is going to be the final answer. I hope this is clear to all of you. Sir, integrating factor 1 upon x cube. Nahi, integrating factor will be e to the power x plus x square by x square. Okay. Lakshya Raj, crazy. Parth, thank you. Ritesh, C का value -1 आएगा. Yes, correct, Ritesh. Yes, correct, Ritesh. You are correct. Answer is option number C. Answer is option number C. Okay. आशा करते हो कि सबका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया होगा, राइट? काफी सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर आप इसको सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर. ओके सर, इन 3 months we can crack JEE 2026. Yes, you can definitely crack JEE Mains and Advanced in 2026 in 3 months. Okay. Okay, Parth. आशा करते हो कि सबको समझ में आता होगा सॉल्यूशन. रितेश, इतना हड़बड़ा मत, ठीक है? Whenever you are solving, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? और ढंग से सॉल्व करो, ठीक है? इतना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट इज अबाउट एक्यूरेसी, ठीक है? ओके रितेश, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स. ऑलराइट, सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ अगेन इफ यू लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, I hope you can see the next problem. So try to solve this next problem. So again, if you see this problem over here, now this will be an interesting problem. Now it is not directly a linear differential equation. However, by doing certain substitution, this can be replaced to a linear differential equation. Okay. So please try to solve this problem. Please try to solve this problem, everyone. Please try to solve this problem. Okay, so if you try to replace this equation over here, so what you can see, first of all, if you write it term of dy by dx, it will come out as dy by dx is equal minus 7 upon x cot of y is equals to e to the power or minus e to the power x by x to the power 5 into cosec y. Okay, now if you recall that it is not directly a linear differential equation because cot y is present over here, right? So it is a Bernoulli differential equation, right? So if you recall
our lectures on Bernoulli differential equation. So it is a Bernoulli's differential equation, right? So what I'm going to do over here is that, so I'm going to divide both this side by cosec y. So if I divide both this square by cosec y, I'm going to get sin y dy by dx minus 7 upon x into over here I will get cos of x, and that is equals to e to the power x minus of e to the power x upon x to the power 5, right? So from here, now if I assume, cos x as t, then minus sin x, sorry, this is cos y as t, then minus sin y dy by dx is equals to dt upon dx, right? So if I replace this in this following differential equation, then this will be equals to, so from here if I replace that, now please don't forget the minus sign, so this will be replaced with a plus sign. All right, so this will be replaced with a plus sign. All right, so ये आपके पास फाइनल reducible differential equation बन जाएगा, which is a linear differential equation, Again, the solution is very simple. Try to find out the integrating factor. So from here, if you try to find out the integrating factor, that is e to the power integration of 7 upon x dx, that will come out as 7 to the power x to the power 7, right? So यहाँ से आपका जनरल सॉल्यूशन जो बन जाएगा, that is y into x to the power 7 is equals to integration of e to the power x into x square dx, right? ये आपके पास बन जाएगा फाइनल. I hope this is clear, right? Oh, there is minus sign over here, I forgot. Okay, there is minus sign over here, so this will be minus of this, right? So if you carry out this integration by parts, and I have already taught you the shortcut for doing the integration by parts, so you can apply that. So the result is very simple, that is x square minus 2x plus of 2 plus some constant c, okay, plus some constant c, and that is basically x to the power 7. Oh, now don't forget that this should not be in y, this should be in t, right? So this is t into x to the power 7. Now t was assumed as cos of y, so this result will be cos of y into x to the power 7 is equals to minus of this result. So if you carry out this finally, and now if you check that it satisfies the condition that at x equals to 1, the value of y is equal to pi by 2. So if I satisfy this equation that at x equals to 1, the value of y is equals to pi upon 2. So from here, the value of the constant, will turn out to be minus of e. और यहाँ से, now if I try to find out that for x equals to 2, the value of y is, or the cos y is, so at x equals to 2, cos of y is equals to minus e to the power x into x square minus 2x plus of 2 minus of e, and then whole divided by x to the power 7. So अगर हम इस पे put करते हैं, so cos of y will come out as 2 into e square minus e by 128. That is basically the value for cos y at x equals to 2. So from here, what I can see is that option number C is going to be the correct answer. I hope you are all getting to the solution or not. Is this part clear? I hope you are able to get to the solution. Sir, unfortunately I need to go cause today is chicken dinner in our home. Okay, Ritesh. Lakshya, that's good that you are able to understand this. Okay, so with this, the answer to this question is going to be option number C. Okay, so I'm leaving some more question in this PDF. Okay, and the PDF will be available in the description box. Okay, so you can check out the description box and download those PDF. Okay, so you can definitely download this PDF to get access to these questions. Okay, so please try to solve these remaining problems, and so that we can discuss about the remaining question in our upcoming lecture. Okay, so with this, I hope this lecture is clear to all of you, and with this I would like to conclude the session over here. Thank you for your understanding and your patience, and I wish you all the best.